Hello, everybody. Let me just. Okay. Just about to. Hello. Hello. Hi. Hello, Hi. everyone. Hello, Deepak. Hello, Bhumika ji, and hello, everyone. Hope you're doing well. Yeah, I'm doing well. Just a sec. I think I'm losing the connection. Okay, okay. We'll give you 5 minutes. Okay. Just give us 5 minutes so that we can fix the thing. Please, please, please allow some time. Okay. Cool. Hello, Simran. How are you? Okay. We are just waiting for Bhumika ji to join. First of all, thank you so much, everyone who's joined this live session. And so, just to give you a brief introduction, that this session is going to happen. Let me just. Okay. Sandy, अभी join मत कर भाई, रुक जा. Okay. Let me just. Okay, she's having a difficulty to join, guys. Okay. Give me a second. We have to. Okay. Okay. Yes. I hope it's connect. Oh yes. Hi, I'm back. Finally. Yeah, finally. Yeah. Yes. So So, I was just telling to the audience that about this session कि ये session हम basically कर क्यों रहे हैं. Before that, I would like to introduce Bhumika ji in this live session. Why don't Bhumika ji you yourself introduce yourself because मैं कर नहीं पाऊंगा अच्छे से. hi, everyone. My name is Bhumika. So, I'm a tarot reader, Reiki grandmaster, and a life coach by profession. And after working in corporate sector for more than 2 decades, I'm finally here following my passion, and we really want to work together in order to make life better for people around us. So यही हमारा purpose है, and I happened to meet Deepak at a very nice retreat in Goa, Yes. which completely changed my life. He was one person जिन्होंने मेरी बहुत help करी थी to get out of a very difficult situation. So since then, touch wood, things have been very good, and so here we are. We are trying to take a session on stress management. So, and we basically want to include कि स्ट्रेस मैनेजमेंट को हम फूड से और माइंडफुलनेस से कैसे मैनेज स्ट्रेस को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं थ्रू प्रॉपर फूड इनटेक थ्रू mindfulness and a little bit of physical activity. Secondly, since we are starting the session for the first time, we'll be doing free tarot card reading. So I'll be reading for whoever wants to ask a question. So yeah, this is a giveaway from my side, and I'm so grateful for all of you to who have joined us today. Please feel free. So at the end of this session, we'll do the live tarot reading. Yes. Of course, ज़्यादा आप नहीं ले पाएंगे. So best होगा आप अपने question comment section में आप डाल दीजिएगा और जो भी हम select करेंगे, we'll try to take maximum number. But yeah, since this is a very first and very introductory session, so we basically take few questions. But yes, definitely. So this is going to be a series for every week. So hopefully कुछ लोग अगर रह भी जाते हैं, so don't be disappointed. Next week we'll take your question first. Is it? Yes. We are going to be doing it every week. Yeah. And we'll actually start a poll and ask which day people feel
it'll be more convenient for them to join. Perfect. No, exactly. Perfect. So whatever time suits you, and whatever day suits you, preferably Saturday, Sunday, or working days. And if there is some particular time. By the way, Sudeep is also here. I Hi, would like. Sudeep. It's good to see you. Our team is back. So Yes. okay, so Bhumika ji, I would like to start my question. Okay, so how do we define stress? Because these days everybody in stress. और बहुत इसको ना बहुत commonly ले लिया है लोगों ने. Everybody says okay, and there's a one word also, depression. Every single says I'm in a depression. Oh, I have an anxiety, or I'm very stressed. So how do we define whether a person is into a depression or anxiety or stress? See, depression is a very loosely used term. So depression is something जो जब जब कोई experience करता है तभी उसको समझ में आता है कि it's a big thing, it's a huge thing. So what happens is people who are not feeling okay, if you're not feeling happy, उनको लगता है कि मैं depression में हूँ. But basically वो क्या होता है? It is an inconvenience because of the stress around them. So stress is something जो बहुत common है, जो बहुत easily लोगों को हो जाता है. Anything that doesn't go as per our wishes creates a kind of प्रॉब्लम और हम लोगों को डिस्कम्फर्ट क्रिएट करता है और डिस्कम्फर्ट जो होता है वही हमारे लिए स्ट्रेस क्रिएट करता है जहां सपोज मेरे को 10 बजे ऑफिस पहुंचना है और मेरे को रास्ते में बहुत सारा ट्रैफिक मिल रहा है तो चीजें मेरे हिसाब से नहीं चल रही है तो वो क्या है वो वहां पे हम लोगों को जो डिस्कम्फर्ट क्रिएट होती है दैट इज स्ट्रेस इन द मोस्ट कॉमन लेमैन लैंग्वेज और आज की डेट में the world is so fast paced and everyone is in such a huge competition कि everyone right from a child to an elderly person हर कोई stress में रह रहा है so that is basically stress and एक चीज और होती है कि लोगों को लगता है कि मेरे को स्ट्रेस नहीं हो सकता मेरे को कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ मैं हंसता रहता हूँ मैं खुश रहता हूँ मेरे को कुछ ये स्ट्रेस नहीं है स्ट्रेस कैन नॉट अफेक्ट मी बट छोटा छोटा स्ट्रेस जो रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें वो डिस्कम्फर्ट कॉज करती हैं वो धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट होती हैं विच टर्न आउट इनटू big problems in the later stage so that is why stress management is very important. Perfect. और Deepak, my question to you, since you are such a health enthusiast and you have been a nutritionist and all, तो I want to know ऐसे कौन से foods हैं जिनको हम अगर consume करते हैं तो हम अपने stress को ज़्यादा easily manage कर सकते हैं? Amazing question, Bhumika ji, because a lot of people, they only thought कि अच्छा stress है ना, so it's only related to here, कि हमारे brain से connected है और हमारी thought से connected है. If you are into stress, so हमारा lifestyle से कोई लेना देना नहीं है. But एक basic सी term है, whatever happen, it starts from our gut. Okay, because our gut is connected through our brain, through we call it a gut brain axis. और surprisingly, I was reading a study जिसमें maximum number of serotonin receptor, which is our happy hormone, they are located in our gut, and maximum number of dopamine they are also synthesized in our gut. So आजकल लोग बोलने भी लगे हैं that your gut is your second brain because maximum hormone is either synthesized or receptor वो हमारे gut में है. So in a very simple term, all the food which are affecting your gut, especially your gut bacteria, bad gut bacteria. So whatever food you are consuming, they are impacting on your gut, and how they impact on your gut, they will decide about your mental health as well. So food which affecting your gut bacteria, which is affecting your gut health, they're gonna definitely hamper your brain health, or you can say the mental health as well. Number one example, refined sugar, most commonly abused food. I would rather say it's not a food. Sugar, especially refined sugar, it's not at all good for your gut health. Okay, it's create inflammation, and especially अगर आपकी body में glucose regulate नहीं है, control glucose regulation नहीं है, so you will experience that that sorry, that high mood and low again. कुछ भी craving होता है, sugar खा लेते हैं. Oh, we are feeling bad. Let's take some sugar. एंड वो टेम्परेरी हाई के लिए आप अगेन अपने गट बैक्टीरिया को हैम्पर कर रहे हैं. सो ऑल दीज थिंग व्हिच इज प्रोसेस्ड फूड में all your junk food comes into the packet, lots of preservative. So all these things, they are basically impacting on your gut bacteria.
apart from all these food, alcohol is something which is affecting your gut bacteria. So these are हमको temporary happiness के लिए ना, we never thought कि in a longer run we are basically destroying our gut health. So Deepak, the people say na dessert stressed spelled backwards is desserts. Yeah. So we should not consider it anymore, right? Definitely not. No, see, of course, there's two things. One is you are consuming something, and once you are addicting something. So if you are enjoying something, if you are basically it's something which is let's say your birthday or your kid's birthday, you are into a wedding, you are basically celebrating something. That is okay, doing some once in a while. But if it is in your lifestyle, every day you are eating something, every day you are eating or popping chocolate, having a dessert, ice cream every day. So that is something which is not going to be helpful for your gut. And whatever it's not helpful for your gut, it's not good for your mental health. So what should we be eating and what should we be avoiding? Like sugar is one thing which we should be avoiding. और ऐसे कौन से फूड्स हैं जिनको खाने से हमारा मेंटल हेल्थ बेटर हो सकता है? और कौन से फूड्स ऐसे हैं जिनको हमें बहुत स्पेयरिंगली खाना चाहिए या बहुत सोच समझ के या बिल्कुल नहीं खाना चाहिए? Can you please share such foods with us? So I am saying कि like sugar is one thing जिसको हमें sparingly खाना चाहिए because it kind of causes hampers our gut bacteria. ऐसे कौन से foods हैं जिनको खाने से हमारा जो mental health है वो better होता है या जहाँ हमें उससे कुछ फायदा होता है which elevates our mood and makes us feel better and in the long run it is not bad for us also. Perfect. So see, anything which is comes from nature, so whole food, leafy green vegetables, poultry like egg, chicken, fish, these all are they all are food which is packed of good antioxidant, minerals, vitamins, because our brain needs minerals, our brain needs vitamins, especially B vitamins. Okay, we need in D3. There's a lot of study which says having a low mental health considered and associated with low vitamin D3 as well. So raw, I mean, food which is comes from nature, not from the market, not from the packet thing. So leafy green vegetables, colored green vegetables, fruits. Okay, uh, your whole chicken, egg, and then you can pick some probiotic and prebiotic foods because हमने gut के बारे में बात करी है. So having a good gut health or creating a good gut health, you need to have a good pre and probiotic food. So prebiotic, all these food which is having a fiber, so things like lentils, your salad greens, and then garlic, onion. These are the good prebiotic foods. And then you can also add some probiotic food, which is the fermented kefir, lime, or yogurt is a good fermented food to add. So those things basically help you in your gut. And then again, मैं बार बार gut पे इसलिए focus कर रहा हूँ because if you have a good gut health, you definitely have a good brain health as well. Of course, gut is something which जो आपने gut में अच्छे से digest किया वही आपकी body को बनाता है, वही आपके mind को बनाता है. So that actually makes a lot of sense. So now we need to take care कि sugar को cut करो. But there are certain, I think, are there certain foods जिनको हम अपनी life से मतलब जिसको हम replace कर सकते हैं with the healthier food? Like you mentioned sugar. अगर sugar हमारे लिए harmful है, but then someone has a sweet tooth, or people who have this habit of having something sweet after every meal, तो उन लोगों के लिए हम ऐसा क्या कर सकते हैं? See, if someone have this issue, that means कि there is a issue with the hormonal imbalance as well. अगर body and ये हार्मोन होता है हमारा इंसुलिन हार्मोन. So whenever you eat things जो आपका इंसुलिन को एलिवेट करता है, and once that hormone go down, आपको फीलिंग आती है to have more sweeter things. Means we need to control that hormone. Having a sweet craving, it's not natural. हम ये आजकल के scenario में ना in this current modern lifestyle, we thought it's very common to have a sweet craving. Ideally, it should not. That means there's something wrong with your gut bacteria. And one more thing, Gunjaji, when we say gut health, so there is a term called dysbiosis, meaning having a low amount of good healthy bacteria in our gut and high amount of
unhealthy or bad bacteria in our gut. Bad bacteria always thrive on sugar, so they need sugar to fuel their self. और ये एक तरह से कॉलोनी है, अगर एक कॉलोनी में यू हैव गुड पीपल एंड यू हैव अ बैड पीपल, सिमिलरली आपके गट में भी यू हैव गुड बैक्टीरिया एंड यू हैव बैड बैक्टीरिया. नाउ अगर गुड बैक्टीरिया का अमाउंट ज्यादा होगा, so they overcome the bad bacteria. But when you have a high amount of bad bacteria in your gut, they overcome the good bacteria, and then you feel more crave for sugar because they need sugar. But your gut bacteria, which is good for your health, they need fiber to thrive. Okay? So having a sugar craving is not normal, but still, yeah, अगर किसी को craving होता है, बहुत मन करता है, then of course there's a lot of thing which is coming in these days. So a good dark chocolate can be a good option. We'll get good magnesium, zinc, iron, and sugar craving भी आपकी कम होगी. Yeah, so dark chocolate is something we can replace for sugar craving. Organic honey, wild organic honey, but organic, not that market वाला जिसमें आपको 90 to 80% sugar मिलने वाला है. It has to be wild unprocessed honey. So how about people usually say कि आजकल आप recipes भी जब भी देखो Instagram scroll कर रहे हो तो people usually say sugar को हटा के गुड़ या jaggery. Is it really is it true or is it a myth? See, technically it's a myth. There is not much difference between sugar and good. It's just sugar is more refined than the good. Again, Okay. Quality of good which we are having these days, it's nothing processed sugar only. So that quality organic, if you are getting it, it's fine. उसमें भी limitation है for if someone who's not able to digest that glucose, so it will give you the same effect. Okay. Exactly, not exactly at the sugar level, but उसके आसपास ही वो effect देगा. So there is no difference between having good or refined sugar if you are having discomfort with the glucose regulation. That makes a lot of sense. Deepak, last question from my side. Maybe the other people might also want to ask us questions, but one question which I have been thinking about for a very long time: does stress contribute to lifestyle diseases? Definitely. See, our brain cannot differentiate between. So, what is stress for our body? Whenever you have any kind of a stress, whether it is a mental stress or physical stress or maybe oxidative stress, which has happened inside our body, जो हमें पता भी नहीं लगता है. Okay, so normally क्या होता है? Whenever you have our body into a stress, हमारी body एक hormone release करती है, which is the cortisol, which is the stress hormone. अब वो स्ट्रेस आपका साइकोलॉजिकल है, फिजिकल है, मेंटल है या टॉक्सिन्स की वजह से है, बॉडी विल रिलीज दैट कॉर्टिसोल हार्मोन जो उसको डिक्रीज करता है और यू कैन से एक फाइट और फ्लाइट मोड एक्टिवेट करता है हमारी बॉडी में, सो दैट वी कैन सर्वाइव इन दैट सिचुएशन. बट उसका ड्रॉबैक ये है व्हेन वी abusing that hormone, elevate करते रहते हैं बार बार, so that hormone triggered the other hormone as well. So you will start gaining weight, you will start gaining, having a type 2 diabetes also with the stress only, having aches and pain, especially on your back. Yes, for these lifestyle diseases, cortisol is one of the cofactors. Somebody's asked for can we eat dates? Date again, it's same as good. So if you don't have any issue with the glucose, if you don't have insulin resistant, if you are not diabetic, it's good to have dates. Again, it has to be organic, not the sugar coated one which normally आपको market में मिलता है. So then it's fine if it is raw and if it is organic. Otherwise, there is no difference. Okay. I think that's the only question. So I would request the audience, whoever wants to ask a question, please feel free to ask any question to me or Deepak. We are happy to answer. So Perfectly. So dates, Deepak, what kind of dates do you suggest? Like we get these Kimia dates. Are these the organic kind of dates or the dates which are available in the market, which are like open dates which are available in the market? Are these the kind of food that we can have? No. See, जो भी स्पेशली जब हम डेट कंज्यूम करते हैं ना, so एक तो है कि वो हाउ लॉन्ग प्रिजर्व्ड. का यूजेस बहुत ज्यादा हो गए हैं.
So I normally avoid to have anything which comes into the package. Take something which is naturally around in your market. So things like, instead of having it, I would rather say have some fruit, especially the seasonal, not that imported one जो preserve होके आ रहा है. So have fruit, जो easily available है आपके पास if somebody has a sweet craving. एंड ऑल्सो डेट्स और बाकी ड्राई फ्रूट्स के साथ प्रॉब्लम ये होता है दैट उनका शुगर अमाउंट बढ़ जाता है व्हेन वी ड्राइड देम. Yes. Having a grapes will give you a different impact, and if you're having raisins, that will give you a different, because वो Of course. concentrate होता That makes a lot of sense. Thank you, Deepak. I actually am enlightened. Now I'll be more watchful of what goes inside my mouth है. and inside my gut. Now, question is, Bhumika ji, from you. Okay, yes, it's one of the co-factor for your health, but the biggest thing, which, and I also learned from you as well, that doing mindfulness technique, or doing some meditation or something which can help you in stress management. So what all we can do as in a spiritual way. So, Deepak, basically what happens is when we are stressed, so हमारी जो बॉडी है ना वो हमारे 7 एनर्जी सेंटर्स के ऊपर चलती है. सो वी हैव अ चक्रा सिस्टम जिसके ऊपर हमारी पूरी बॉडी की एनर्जी बैलेंस होती है. और जहां एनर्जी में डिसबैलेंस क्रिएट होता है वहीं पे हमें डिजीजेस होती हैं, वहीं पे हमें इश्यूज आते हैं, वहीं पे हमें एक्स एंड पेन्स होती हैं, एंड ऑल दोज थिंग्स स्टार्ट टू अफेक्ट अस. और जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ, अगेन एज यू सेड, कि वो मेंटल फिजिकल स्ट्रेस, किसी भी तरीके के स्ट्रेस से वो चक्रास जो है आपके डिसबैलेंस्ड हो सकते हैं. सो देयर आर 7 एनर्जी सेंटर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट चक्रा, which is the base, which is at the base of our spine. Then we have sacral chakra, which is just two fingers below our navel. Then we have our solar plexus, heart chakra, throat chakra, third eye, and crown chakra. So जो हमारा base chakra है, it deals with the basic instincts, food, security, safety, जो हमारी basic necessities हैं. As long as हमारी basic necessities met हो रही हैं and we feel secure, that chakra is okay. Then comes the sacral chakra, which is the seat of creativity. Whenever you feel creatively blocked, और आपको लगता है कि मेरे आसपास मैं बंधा हुआ हूँ, मुझे किसी चीज के अंदर जकड़ा गया है, आई कैनॉट बी माई सेल्फ, आई कैनॉट बी दैट फ्री पर्सन दैट आई एम, आई कैनॉट लिव माई लाइफ जैसे मैं जिस तरीके से मैं जीना चाहता हूँ, तो वो सेक्रल चक्र आपका इम्पैक्ट होता है. देन कम सोलर प्लेक्सिस, विच इज द सीट ऑफ आवर एनर्जी, आवर इमोशंस. जहां इमोशनल टर्बुलेंस हुई, दैट चक्रा starts to act up. And heart, which is the seat of love, universal love. When you can't love people around you openly, so your heart chakra gets impacted. Throat is, you are not able to speak clearly, you're not able to express yourself. People are suppressing you, people are pointing at you, so you kind of start suppressing yourself, and then your throat chakra gets upset. Third eye is the seat of your intuition. और जहां आपको मेंटल स्ट्रेस होता है, तो सबसे पहले आपका थर्ड आई क्लाउड होता है. सो यूजुअली पीपल नोटिस कि स्ट्रेस है तो नींद नहीं आ रही है, स्ट्रेस है तो ड्रीम्स आ रहे हैं, स्ट्रेस है तो वी आर नॉट फीलिंग, वी कांट इवन make a decision clearly. So that is because your third eye starts to get clouded. Then we have the crown chakra, which connects us to the divine. So crown chakra usually लोगों का, जो people who are on the right path, people who follow their heart, people who are in touch with their soul, उनका crown chakra usually ठीक रहता है. So what happens is, जहां जैसे जैसे stress आपकी life में आता है, if you're worried about your basic necessities, your root chakra will go. तो वो जैसे जैसे आपका चक्रास ब्लॉक होते जाते हैं, वैसे वैसे आपकी बॉडी में भी बॉडी पे इम्पैक्ट आता है. यू स्टार्ट हैविंग डिजीजेस, यू स्टार्ट हैविंग माइग्रेन्स. यूजुअली जो लोग मेंटली स्ट्रेस्ड रहते हैं, दे कंप्लेन अबाउट माइग्रेन, दे कंप्लेन अबाउट their eyesight getting weaker and weaker. It is not because कि वो बहुत टीवी देख रहे हैं, स्क्रीन के आगे बैठे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं. It is because their mind is so stressed that they look at the world from that myopic view. They start looking at the world with a very very myopic view. तो जब हम माइंडफुलनेस करते हैं, जब हम
किसी भी तरीके से मेडिटेट करते हैं तो हमारे जो चक्रास हैं वो अलाइन हो जाते हैं. एंड नाउ आई एम नॉट talking about the traditional meditation that you're sitting आप बैठे हो आराम से चौकड़ी लगा के एंड यू आर कि ऋषि मुनि बन जाओ या पूरा आधा घंटा बैठ के कोई थॉट्स नहीं आ रहे या नहीं आ रहे. माइंडफुलनेस इज वेरी वेरी सिंपल. यू कैन प्रैक्टिस माइंडफुलनेस इन योर डेली रूटीन. आप कोई भी काम कर रहे हो, इफ यू आर. सबको ये लगता है, हम जिससे कि हम मेडिटेट कर रहे हैं तो सबको ये लगता है मेडिटेट करना मतलब आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ेगा, जल्दी जब सब सो रहे हो, एक एक शांत कॉर्नर ढूंढना है, चुपचाप बैठना है. तो सबके लिए वो इटसेल्फ इज द बिगेस्ट टास्क एंड दे थॉट ओके ये तो हमसे नहीं हो पाएगा. एग्जैक्टली. Question: How can I reduce my anxiety? Simran is asking how can I reduce my anxiety. So yeah, I mean, Bhumika ji, if you like to answer. Yeah, so anxiety basically हमें तब होती है. वन इज कि कोई भी चीज आपको फील हो रही है, whenever you have a difficult emotion or a difficult situation, उसको उसको अवॉइड करने की कोशिश मत करो. समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज वी आर फीलिंग सैड एंड वी आर ट्राइंग टू अवॉइड दैट सैडनेस. हम क्या कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ बैठ रहे हैं, चलो थोड़ी बात करते हैं, शायद हंसने के बाद हमारा वो फीलिंग चला जाएगा या चला जाएगा. सो व्हाट वी डू इज वी अवॉइड फेसिंग दैट पर्टिकुलर इमोशन. तो सिमरन जी, मैं आपको सबसे पहले तो ये बोलूंगी दैट यू नीड टू सिट विद दैट इमोशन. इफ यू आर फीलिंग एंशियस, you need to sit with that emotion and you need to figure out what in your life is causing that anxiety. वो किस चीज से रिलेटेड है, whether that anxiety is related to your family, related to your work, related to your financial situation. तो जो भी चीज है ना, उसको एक बार उसके साथ बैठे, just note down what can go wrong, what exactly can go wrong, and then उसका पन्ना पलटी और उस पे लिखिए कि what exactly can go right. So what happens is when you weigh those things, when you weigh what can go wrong and what can go right, तो एक बैलेंस आता है आपके अंदर. यार सिमरन, आई कंप्लीटली अग्री कि लोग बोलते हैं कि सिचुएशन को अवॉइड करो, बट सिचुएशन को अवॉइड करना इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन टू योर एंजाइटी. जब तक हम सिचुएशन को फेस करके उसकी जड़ तक पहुंच के उसको हटाएंगे नहीं, तब तक वो एंजाइटी आते जाते रहेगी. And it is always better to face that thing and work through those issues rather than avoiding them. So मेरा तरीका एंजाइटी को डील करने का हमेशा यही रहा है कि okay, I am anxious about this situation. Say we'll take an example that someone is having difficulty at work. उनको बोल दिया गया है कि अगर आपने इतना नहीं किया आपको नौकरी से निकाल देंगे. So मेरा तरीका ये रहेगा कि I'll sit with that person, I'll say that okay, अगर आप यू थिंक दैट आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा अगर आपने इतना पर्टिकुलर काम नहीं करा. नौकरी से निकाल देंगे तो क्या होगा, राइट? मेरे पास ये नहीं है, मुझे इस चीज में प्रॉब्लम आएगी, इस चीज में प्रॉब्लम आएगी, इस चीज में प्रॉब्लम आएगी. अगर देन लुक फॉर द अपॉर्चुनिटीज कि अगर ये कर दिया तो इसके बाद क्या, अगर मेरे को यहाँ से निकाल भी दिया तो उसके बाद क्या, will I get an opportunity, will I not get an opportunity? So when you start, so you are facing difficulty in making a decision, I would say do what your heart says. Do what your heart says. Don't depend too much on your brain. So what happens is whenever you are in the middle of something, तो जो आपका ब्रेन का जो रेप्टिलियन ब्रेन होता है ना, एमिगडाला, दैट गेट्स वेरी वेरी एक्टिव एंड दैट इज when you will get all kinds of fears. तो वो जो reptilian brain होता है ना, even though it is meant to protect you, but it starts giving you fears. आपकी जितनी भी चीजें आपकी लाइफ में डरावनी होती हैं, आपको वो सामने आनी शुरू हो जाती हैं. So sit with yourself and realize कि मेरा दिल क्या कहता है, what does my own heart and my soul is telling me to do. And I'm telling you, जिस दिन आपने अपने दिमाग को थोड़ा पीछे रख के अपने अंदर की आवाज को सुनना शुरू कर दिया ना, योर लाइफ विल कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म. दिस इज समथिंग व्हिच आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस्ड, सो आई वुड कंप्लीटली सजेस्ट दैट. Instead of avoiding, I mean, what you want to say is instead of avoiding that emotion, whether it is fear, anxiety, sadness, happiness, we should accept that emotion. We should rather than accept that emotion, but then we should not even get attached to that emotion.
Now what happens is when people are in that anxiety mode और वो उस चीज के साथ बैठते हैं, तो जब वो लिस्ट डाउन करना शुरू करते हैं ना, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू स्टे बैलेंस्ड, क्योंकि जब हम लिस्ट डाउन करते हैं तो वो बहुत सारे इमोशंस और जागते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ओ माय गॉड। व्हेन वी स्टार्ट, स्पेशली जब हम नेगेटिव्स को लिस्ट डाउन करते हैं, उसका तरीका यही होता है कि ठीक है ना, ये तो वैसे भी अगर ये होना है तो ये तो अनअवॉइडेबल है। Exactly. और अगर हम इससे डरेंगे तो शायद शायद हमारे में हिम्मत भी नहीं रहेगी इसको फेस करने की। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि अटैच नहीं होना है, उसको लिखो, हाँ यस दिस इज अ फैक्ट, उसको एक फैक्ट की तरह देखो कि हाँ दिस इज एंजाइटी, दिस इज कमिंग फ्रॉम दिस, अगर ये चीज ऐसे हो गई तो ये होगी दिक्कत। दूसरी साइड जब आप लिखना शुरू करोगे ना, मेरे पास अपॉर्चुनिटी क्या है, ट्रस्ट मी, जब उसको भी डिटैच्ड होकर लिखोगे, यू विल सी कि हमेशा अपॉर्चुनिटी आपको कहीं ना कहीं ज्यादा होपफुल लगेगी रादर देन द लिमिटेशंस। So you feel sometimes you feel alone. So Simran ji, what happens is why we feel alone is because somewhere we are not comfortable with what we are feeling about ourselves at that moment. We are not बेसिकली क्या है कि हमें अकेला तब लगता है, आपने लोग देखे होंगे, आसपास कोई नहीं है पूरे घर में, पूरा पूरा दिन वो लोग अकेले हैं, बट देन दे आर वेरी हैप्पी इन देयर लाइव्स। व्हाई? बिकॉज दे हैव फाउंड पीस विद इन देमसेल्व्स। And then again, it brings me back to the mindfulness. So what I was trying to say is that mindfulness doesn't mean कि आपको सुबह एक कोने में बैठ के आपको सुखासन में बैठ के हाथ जोड़ के आपको मेडिटेट करना है। When we start living mindfully, it is more about जो भी काम हम कर रहे हैं, are we completely present in doing that? Even if I am here now, am I completely present? Am I completely present in interacting with you? या मेरे दिमाग में 10 चीजें और चल रही हैं? अगर मेरे दिमाग में ये चल रहा है ना कि यहाँ मैं आपके साथ बात कर रही हूँ और उधर मेरे को ये लग रहा है कि अरे मुझे यहाँ जाना है, मुझे वो करना है, that will not give me the clarity, that is mindfulness basically. When you are doing one thing and you're completely focused, engrossed, and you are enjoying doing that, that is mindfulness. And it can be a very very simple technique. So मेरे पास जो लोग शुरू में आते हैं, people who say कि there are 100 thoughts running and I can't sit and meditate, I can't even sit for 10 minutes without having thoughts in my head. So मेरा बहुत सिंपल तरीका उनका ये होता है कि if you're sitting, किसी एक चीज के ऊपर फोकस कर लो, even if it is like a clock ticking in your room, just focus on that tick tock। आप थोड़ी देर बैठोगे ना, and you'll be focusing only on tick tock, आपके thoughts बिल्कुल जीरो हो जाएंगे, and that is when mindfulness or meditation actually comes. So self-made strong girls is how to practice self-love. So self-love is something जिसके साथ ना हम में से हर कोई स्ट्रगल करता है। एंड सेल्फ लव पे एक्चुअल में ना आप प्लीज अपने पूरे क्वेश्चंस नोट करके रखिएगा, बिकॉज वी आर गोइंग टू हैव अ सेपरेट सेशन ऑन सेल्फ लव, because that is one of my most favorite topics, and this is something which is very difficult to learn, but which is something very very basic. So self love के लिए मैं आपको छोटी छोटी चीजें बताती हूँ अभी के लिए, but in the separate session I'll make sure that we tag you and you can actually attend that session too. तो सेल्फ लव, सबसे पहली चीज जो सेल्फ लव के लिए इम्पोर्टेंट है वो है सेल्फ एक्सेप्टेंस। बहुत हमें ना पूरी लाइफ में ना हमने लोगों के बारे में यही चीजें सुनी है, हम लोगों से यही चीजें सुनी है, तुम्हारा ये अच्छा नहीं है, तुम्हारा फेस अच्छा नहीं है, तुम्हारा रंग दबा हुआ है, तुम्हारा ये है, तुम्हारा वो है, तुम अच्छे से बोल नहीं सकते हो, तुम्हारी आवाज में क्लैरिटी नहीं है, तुम्हारा हाइट छोटा है। बट this is who we are, this is how God has created us. तो सबसे पहली चीज ये है कि accept that this is who I am, this is how I am created, and this is how I'm going to live my life. I love and accept myself the way I am, and I'm not saying that you don't सजो बनो नहीं, अपने आप को वो मत करो, improve yourself by all means, but focus on improving yourself जिस चीज में आपको खुशी मिले। Like if I want to improve my health and I like doing that, I will go and work out, I will eat healthy, but I'll not do it under the peer pressure. ये नहीं है कि आज मेरी फ्रेंड
जो है वो उसका बहुत अच्छा फिगर है, तो मुझे डाइट करना है या मुझे एक्सरसाइज करना है. सो दैट इज हाउ यू एक्चुअली practice self love. One, accept yourself completely. Two, don't get deterred. मतलब दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर मत करो. प्लीज अंडरस्टैंड यू आर अ यूनिक क्रिएशन ऑफ गॉड. और जो आपको यूनिवर्स ने बना के भेजा है ना, वो इसलिए बना के भेजा है क्योंकि इस पर्टिकुलर पैकेज की इस दुनिया में जरूरत थी. सो यू are an are a very very important and very very integral part of this world, and you bring your own gifts. So once you start accepting that, that is when your self love will start to grow. Another thing, मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताती हूँ. Take a pen and paper. Start writing good things about you. It could be anything. I like my smile, or I like my eyes, or I'm an amazing artist. I sing very well. जो भी आपको छोटी छोटी अपने बारे में अच्छी चीजें समझ में आती हैं, start writing them. Start looking at that notebook whenever you feel low or down, or whenever you feel कि मेरे में lack है. Go and look at those qualities that you possess. Another very 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 easy way is affirmations. Self love की affirmations. I am enough. I am beautiful. I am perfect the way I am. I love myself the way I am. जितना आप इन चीजों को प्रैक्टिस करोगे, you will slowly get into the groove of loving yourself. Okay, so I want to ask something, Yeah. Bhumika ji. So all this thing which you just said, ये practice, is it something a regular practice, or everyone should do it on a everyday basis or on a weekly basis, or what? Is there any fixed parameter that you should do every day or take, give that much of time? See, मेरे एक्सपीरियंस में, और जो हम वैसे भी स्पिरिचुअली हम एक चीज मानते हैं कि इट टेक्स 45 डेज टू मेक अ हैबिट. तो अगर आप उसको डेली हैबिट में रखते हो, तो 45 डेज के बाद ना आपको खुद अंदर से आपके अंदर चेंज आ जाएगा. सो इट इज लाइक वी आर रीप्रोग्रामिंग आवर सबकॉन्शियस. It will become a part of your life then. It becomes a part of your life. जैसे हम छोटे होते हैं, we don't know how to walk, we don't know how to walk, we don't know certain things. और जब एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसको नहीं पता उसको कब भूख लगी है, कब ये, तो वो एक रूटीन बनाती है, उनकी मदर एक रूटीन बनाती है कि इस वक्त फीड करना है, इस वक्त सुलाना है. तो वो उस तरीके का जब उसका वो रूटीन बना देती है, दैट इज व्हेन द चाइल्ड लर्न्स. तो वही होता है, वो हम अपने आप में एक छोटे बच्चे हैं, हम अपना रूटीन खुद बनाते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन से चलते हैं, तो दैट बिकम्स द वे ऑफ आवर लाइफ. There's one more question from फेसिंग डिफिकल्टी इन मेकिंग डिसीजन. सी, मैं वही आपको मैंने पहले भी बोला, और मैं अभी दोबारा बोलूंगी. वन थिंग, व्हेन यू आर फेसिंग अ डिफिकल्टी इन मेकिंग डिसीजन, एक चीज होती है, हमारा माइंड हमें डराता है. डोंट मेक एनी डिसीजन आउट ऑफ फियर इज व्हाट आई विल से. जो भी आप डिसीजन लेते हो, weigh the pros and cons by all means, be practical, but at the end of the day, do what your heart says is right for you. डिसीजन में कभी भी फियर से डिसीजन नहीं लेना है. You need to देखो, in spiritual law we have just two things. One is fear और दूसरा है love. So if you are doing something out of love, it will always lead you to the right path. And if you are doing something out of fear, you will end up repeating the same cycle again. So I hope I'm able to answer your question. Okay. Okay. So I guess we'll take more questions, especially for the self-love. We'll do the separate session on a weekend, or maybe on a working. We'll do the post. Maybe audience will like to do. So time and date we'll decide for the next week. We'll do session on self-love. Do the reading, and should we conclude the session for today? Next week, definitely. So I'm open for the tarot reading session. If anyone wants to ask a question, please feel free to ask your questions. Okay. Tell me, what can I guide you on today? Self-made strong girl. I'm up for a reading. So we are reading for you. If you have any question, you can post it on the comment section. Yes.
And by the time Bhumika ji is doing reading for self-made strong girl, if any other person wanted to ask any question, something going on their mind, wanted to take some decision, they can just drop the question and we'll Yes, take the question. we'll take the question definitely. So, self-made strong girl, I'm waiting for your question. If you don't have a question, we can do a general energy check for you. I think there is no question as such. Okay, so How is your health going to be? Okay, let's check. How is your health going to be? So what I am feeling from your cards is that there are certain things which have been bothering you for a very long time, and maybe you are in a conflict with someone. हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जो आपको बहुत परेशान कर रही हैं, एंड देयर आर पीपल अराउंड यू जो आपको कहीं ना कहीं पोक करते हैं. सो what is happening right now is that all these things, इन सब ने आपके दिमाग के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ बना दिया, and that is the reason why you are having certain health issues. If I'm not wrong, you might be having some issues with your back. If at all वो back issues आपको हैं, I would suggest कि आप you need to take things a little slow. You don't have to do everything on your own. The moment आप हेल्प के लिए डिमांड करोगे, आपको हेल्प मिलेगा. So you need to really take care of you need to really put yourself out there and ask कि नहीं यार, मुझसे ये इतना नहीं हो रहा है, I need help, I want you, whoever is in your family or in your friend circle, जहां पे भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, tell them that this is it, I need help, I want support from you guys. So feeling of unsupportedness is something which is making you have these issues. तो मैं बोलूंगी कि अपना थोड़ा सा जो आपका काम है, आपका जो जो भी आपकी लाइफ के इश्यूज हैं, उसको अपने क्लोज सर्कल के साथ बांटना शुरू करो. एंड आई एम टेलिंग यू, जब आप जिस दिन आपने वो अपनी प्रॉब्लम लोगों से शेयर करनी शुरू करी, और जिस दिन आपने लोगों को बोला कि मेरे को हेल्प चाहिए, दे विल कम थ्रू एंड दे विल हेल्प यू. You just have to ask and you will have that support. So your health need will get improved, but थोड़ा सा अपने आप में स्ट्रॉन्ग वुमन या सुपर वुमन मत बनिए. थोड़ा अपने आप को रिलैक्स कीजिए एंड स्टार्ट सीकिंग हेल्प. आई होप it helped you. So Deepika Masi want to know about your career and future life. Let's see what career holds for you. सो दीपिका, जो मुझे कार्ड से समझ में आ रहा है कि आपको लाइफ में जो आपने एक्सपेक्ट किया था लोगों से, दैट हैज नॉट हैपेंड फॉर यू. कहीं ना कहीं मे बी यू वर एक्सपेक्टिंग अ सर्टन प्रमोशन और अ सर्टन raise, or you wanted in on a certain project, वो आपको मिला नहीं है. बट डोंट वरी, जो भी आपकी लाइफ में ये चीज हुई है ना, इट इज गोइंग टू एक्चुअली लीड यू टू समथिंग मच मच बेटर. सो वेदर इट इज फाइनेंशियली और इट इज इन टर्म्स ऑफ योर जिसको हम बोलते हैं हमारा स्टैंड पॉइंट, हमारा जो लोगों के अंदर हमारा जो रुतबा होता है, यू विल बी गेनिंग मोर. तो जो भी आपके साथ अभी पहले हुआ है लाइफ में, इट इज नॉट समथिंग दैट शुड पुल यू डाउन. तो आप जो भी आप कर रहे हो करो, पुराने वाले जो सेटबैक्स हैं उनको भूल जाओ एंड स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड. जो भी आपके आगे जो चीजें आएंगी ना, दे विल बी मच बेटर देन व्हाट यू हैव लॉस्ट इन द पास्ट. And financially you are going to grow. This year is going to be very good for you financially, so don't worry at all. we have So so on career and future. There's someone Nishu. Can you Nishu, please guide my future future and and health. Okay, Nishu.
So Nishu, what I can see is you have a lot of workload on yourself. फैमिली का हो सकता है, चिल्ड्रन का हो सकता है, या आसपास रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज्यादा हैं कि चीजें कहीं ना कहीं मुश्किल हो रही हैं अकेले संभालना. You actually need to take it slow, and you actually need to rest. Maybe spend some time alone, maybe go out on a solo vacation. इस वक्त आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है टू रिलैक्स योर माइंड एंड टू गिव रेस्ट टू योर बॉडी, बिकॉज व्हाट आई कैन से इज दैट योर माइंड इज इन अ स्टेट जहां पे हर चीज आपको परेशान कर रही है. एंड समटाइम्स इवन दो यू कीप अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रंट, बट कहीं ना कहीं इंटरनली ये लग रहा है कि दिमाग फट जाएगा. This is the exact thing that I am feeling for you. So one, don't get emotional about things. अगर एक चीज नहीं हो रही है या एक चीज उस तरीके से उस परफेक्शन से आप नहीं कर पा रहे हो, टेक अ ब्रेक. यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट, यू जस्ट हैव टू बी जेन्युइन इन योर लाइफ. तो जब जहां आपने बेस्ट, इफ यू हैव पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, डोंट थिंक अबाउट व्हाट पीपल आर सेइंग टू यू. थिंग्स विल इम्प्रूव. आपके हेल्थ में चीजें इंप्रूव होंगी. फ्यूचर लुक्स वेरी वेरी ब्राइट. You will get something new, some new beginning will come to your life. So you look at a good thing. The only thing is कि अभी के लिए you need to relax, especially mentally. Okay. So again, the question is same: career and future from Simran. Simran, okay. सिमरन, आपका करियर थोड़ा, लोग आपको बहुत ज्यादा हार्शली जज करते हैं जो मुझे कार्ड्स में दिख रहा है. पीपल आर वेरी वेरी क्रिटिकल ऑफ वॉट एवर यू डू. एंड इसी वजह से शायद कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा अपने आप को यू नो बहुत ज्यादा अपने ऊपर हार्ड रहते हो. यू आर बीइंग वेरी वेरी हार्ड ऑन योर सेल्फ. सो प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड कि लाइफ में जो भी हो रहा है, इफ पीपल आर जजिंग यू हार्शली, it is not on you, it is on them. You are doing your best, you are going an extra mile. आपको अपने आप आपको अपने आप में थोड़ी कॉन्फिडेंस लाना है. एंड यू स्टार्ट टू, एंड यू नीड टू पुश पीपल बैक. थोड़ा सा उनको आगे से पुश करना चाहिए, करना पड़ेगा आपको कि नहीं यार, इनफ इज इनफ, आई हैव डन द बेस्ट आई कुड. अगर आपको इसमें कुछ इंप्रूवमेंट चाहते, गिव मी अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म. समवन, if someone criticizes your work, ask them, okay, how can I do it better? Please teach me how to do it better. So you have to be very wise in your work की जो आपकी transactions हैं. बाकी अगर आपको जॉब चेंज करना है इस पॉइंट इन टाइम पे, थिंग्स आर लुकिंग वेरी गुड. यू विल इजीली फाइंड अ जॉब चेंज. एंड वॉट एवर हार्ड वर्क यू हैव बीन पुटिंग इन, उसका आपको 110% उसका आपको रिटर्न मिलेगा. सो जस्ट गो अहेड एंड find the job that you're looking for. You don't have to fear anything. Just don't be scared. Perfect. So we have one more question from Indu. Okay. Indu wants to ask about her father's health. Okay. So Indu, your father seems to be going through certain health related issues, but most of these issues are you know एज और लाइफस्टाइल बेस्ड. कोई ऐसा इशू सीरियस वाला मुझे उनके लाइफ में नहीं नजर आ रहा है. आई डोंट सी हिम facing any serious health issues in the near future also. The only thing is he needs to be very careful about his food. I think he's not eating properly. I think there are certain things जो उनको नहीं खानी चाहिए but वो मानते नहीं है, या there are certain things जो उनको डॉक्टर्स बोलते हैं and वो खाते नहीं है. So yes, that is something which needs to be taken care of. Health wise, there is nothing serious about him, he'll be fine. But yes, be mindful of what he's eating and how he's taking care of himself. Okay. One more question regarding health and career again is from Wished Annie. Okay. Asking about health and career, huh? See, health and career, these are two most important things in life, right? You're welcome, Hindu. So health and career for the name was Wished Annie. Okay, Annie, let's see.
So career-wise, things look pretty good for you. Financially, you will gain. अगर आप कुछ नया वेंचर, नया प्रोजेक्ट या नए या प्रमोशन के लिए ट्राई करते हो, that also will be forthcoming. But then I don't know why I feel that your lifestyle is very sedentary. थोड़ा physical activity is on a lesser side, and even though it doesn't look like you'll have a serious health issue, but that sedentary lifestyle is not actually helping you. तो थोड़ा सा अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन लाइए, थोड़ा अपनी नींद प्रॉपर टाइम पे करिए, एंड थोड़ा eat at proper intervals and eat healthy food. That is the only thing that I can see in your health. Career wise, things are looking very good. If you are seriously thinking about a new venture or something new is coming up your way, go ahead और बिंदास उसको ले लीजिए. Things are going to be very very good for you. Okay. Any other Gurpreet. question? We'll take Gurpreet. one or two. We'll take last two questions now. One is Gurpreet. Okay. Another Tanu, is dealing with goals. So we'll take these future two. part. Perfect. Okay. So last, we'll be taking till Deepika. May I know about my future So partner? last we take Annie, Beast Annie. We'll taking question from Gurpreet now, career and finance. Yes, career and finance. Then Deepika has asked one more question. That's it. So we'll be taking questions till Deepika Masi. So Gurpreet, let's draw cards for Gurpreet Kaur. Oh God, career में कितना stress है सबके. So गुरप्रीत, करियर का काम तो आपका थोड़ा स्ट्रेसफुल है, एंड व्हाट आई एम सीइंग इज दैट थिंग्स विल चेंज. थोड़ा थोड़ा फर्क आना चाहिए, लिटिल बिट से 30-40% का चेंज आपकी लाइफ में अभी नेक्स्ट 2 मंथ्स में आना चाहिए. बट ओवरऑल थोड़ा स्टैग्नेंसी है, कुछ चीजें स्टक हैं लाइफ में मे बी, एंड you are taking everything to heart. You are very very emotional about your work somehow. और वो जो इमोशनल होना है वर्क के साथ, वही आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है. द मोमेंट यू स्टॉप बीइंग इमोशनल एंड स्टॉप बीइंग अटैच्ड टू योर वर्क सो मच, you will see that even the things start moving in your favor. अपने आप से चीजें होने लगेंगी जिस दिन आपने थोड़ा उससे अपने आप को हटा लिया, डिटैच कर लिया इमोशनली. Another thing is, you need to speak your truth. You need to learn to tell what you're really feeling. So sometimes what happens is, out of fear we don't express ourselves. So whether it is your boss or your subordinate or your peers, make sure कि maybe diplomatically but अपनी बात रखना शुरू करो. The moment people see that you're someone who speaks truly and is not afraid of telling what is in their mind, you will see the attitude of people changing towards you, and that is when life will also begin to change. Health wise, again I'm getting a very strong sense that health wise you suffer from some aches and pains, और वो majorly आपका stress related है. I got the meditation card, so yes, you need to start meditating, and you really really need to practice mindfulness, because the moment you start clearing your head, things will begin to clear up. And try to diversify, maybe learn some new skill, because जैसे आपने कोई और skill सीखा, you will get an opportunity which will help you move forward in life. I hope that helps you. So if you're thinking about doing some course or something, please go ahead and do it. Don't wait. Perfect. So the next question from Tanu, dealing with goals. And Dealing then with we'll take one question from one person, and then next session we will take all of your questions. So we'll yeah take, because we have to end this yeah session today. It's supposed to be a short session, but thanks to all of you, and thanks to all your love, it became love. It's almost 1 hour हो गया, पता ही नहीं लगा. I mean, I love to talk to such. I mean, there's such a good energy in the group. I'm really really loving it. So We'll do it more often. we'll take two more question, and then we'll end this session, and hopefully next definitely gonna see you again. So yes, one is from Tanu, So Tanu 13.
Tanu, dealing with goals. So, dealing with goals and another thing is कि आप relax नहीं कर पा रहे हो. आप इतना किसी चीज के साथ इतना किसी चीज के ऊपर hell bent हो. You're chasing some dream which is not even letting you sleep at night, and that is the problem. That is the only issue that is holding you back in your life. um, थोड़ा अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू करिए तनु. जो आप चाहते हो वो आपकी लाइफ में आएगा, बट जितना हम किसी चीज को चेस करते हैं ना, वो उतना ही हमसे दूर भागती है. सो एट दिस पॉइंट इन टाइम यू नीड टू रिलैक्स, टेक अ स्टेप बैक मे बी, एंड स्टार्ट फोकसिंग ऑन द गुड थिंग्स दैट यू हैव रादर देन फोकसिंग ऑन समथिंग विच यू आर रनिंग आफ्टर. आपकी लाइफ में वो चीज जो आप चेस कर रहे हो वो मिलेगी आपको. दैट गोल विल fulfill, that goal will get fulfilled, but then right now you need to detach from that, relax a little bit and stay put. और जो भी आपके आपके आसपास जो बहुत सारे लोग हैं शायद, या बहुत सारे चीजें हैं जो आपकी बातें जो जिनकी बातें आप सुनते रहते हैं, दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, थोड़ा उन लोगों के साथ अपना कट ऑफ करो. If someone comes and complains to you continuously, that person is actually sucking your energy away. Don't engage in the people who complain about things. जैसे ही आप वो कंप्लेन वाले लोगों को अपनी लाइफ से हटाओगे, आप देखोगे कि आपका एक बहुत एनर्जी ओपन अप हो गया है, एंड यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग थिंग्स मच मोर इजीली. आई होप दैट हेल्प्स तनु. So the last question we were going to take was Deepika. Okay. Future partner. Let's see, Deepika. What does your future partner look like? What is the guidance? So Deepika, from the cards, what I'm feeling is that you have not been very lucky in love in the past. जितना जहाँ सोचा कि चीजें ठीक रहेंगी, लाइफ आगे अच्छे से बढ़ेगी, वहां पे चीजें वैसी रही नहीं है. एंड समवेयर you were disappointed in love for the longest time, but right now the time is right and you really really need to let go of your past. क्योंकि अगर आप पास्ट की चीजों को याद करते रहोगे और उनके साथ कहीं ना कहीं अपना इमोशनल कनेक्ट बना के रखोगे, तो चीजें आपकी लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगी. You need to let go of your past, cut the cords, and just move on. And I'm not saying ki move on out of anger or despair or anything. Move out by sending them love. Okay, fine, it was not meant to be, and now this is what I'm going to do, and I'm going to move ahead and find someone who will love me and accept me for who I am. Trust me, जिस दिन आपने पुरानी चीजों को सोचना और याद करना बंद कर दिया, you will find a wonderful person. So this person might be a fire sign, Aries, Leo या Sagittarius. This person will love to travel, और सबसे अच्छी चीज ये होगी that this person will have a very very balanced temperament. So yes, relationship is on the cards for you, and there are chances that this year you might find the one for you. The only thing is कि past की चीजों को completely cut करो, अपने आप को heal, अपने heart को heal करो. This year most probably you will find the one meant for you. So sun moon rising top 3 में, big 3 में Sagittarius, Leo या Aries will be there. So watch out for that person. That person is somewhere around. I hope that helps you, Deepika. Done. So I guess if we have 2-3 minutes, we can take last question. Yeah, because I guess sure. So there's 2 more questions. One from Aarti. Dealing with marriage. Okay. There's one more question from Mehak Walia. So we'll take these questions and yeah. we'll end this session, and hopefully next week we'll take more questions. इसके बाद भी अगर if somebody has any question, they can directly DM to either Bhumika ji or they can DM to me as well. So we'll take. Yeah. So आरती जी, बहुत इमोशनल हैं आप, और कहीं ना कहीं you pour in a lot of emotions in your relationships, whether it is friendship, whether it is siblings, whether it is parents, whether it is your person. तो जो emotions है ना, वो कहीं ना कहीं overwhelm हो रहे हैं, and that is what is causing you problems.
I don't know, आपने dealing with marriage लिखा, you might be already married or you might be looking to get married, but सबसे बड़ी जो चीज आपकी लाइफ में इस वक्त प्ले आउट कर रही है, that you need to control your emotions and you really need to work your emotions and help in releasing them. तो जो तकलीफ आप इस वक्त फील कर रहे हो ना, उसे आपको ओवरकम करना है. वो चीज अभी हो नहीं पा रही है. If at all, even if you are married or even if you are not married and looking for a partner, एक बहुत ही strong message आ रहा है that connect with the feminine energy, connect with your female friends, start enjoying your life, start going out with them, live your life more freely. The moment you start doing those things in your life will start getting better. You really need to let your hair down and come into that balance. और वो balance आपको तभी मिलेगा जब आप अपने आप को फ्री करोगे. जो भी आपका, सी, हर इमोशन, हर चीज एक इंसान आपके लाइफ में नहीं कर सकता. हर चीज के लिए डिफरेंट लोग होते हैं. जैसे आई माइट नॉट गेट दैट इमोशनल फुलफिलमेंट फ्रॉम माई पार्टनर, बट मेरी लाइफ में कोई ऐसी फ्रेंड हो सकती है जिसके साथ में कोई भी बात शेयर कर सकती हूँ. सो डोंट डिपेंड ऑन वन पर्सन फॉर योर एंटायर सर्वाइवल. Find your tribe. That tribe is someone, the tribe is the thing which will keep you going and which will uplift you to your highest potential. So don't fix the entire responsibility of your happiness on one person. Perfect. I hope that answers your question. Okay. Mehak Walia, convert and marriage this year. Okay, let's see if you will get married this year. Let's see what cards have to say. Mehak, so there are certain things which have been disappointed you. There are certain issues that have been hurting you in the past. और शायद जहां आपने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ शादी होगी, वहां शादी नहीं हो रही है, या जहां आप चाहते हो शादी हो जाए वहां नहीं हो रहा है. तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि एक इंसान के ऊपर फिक्सेटेड मत रहिए. There are very high chances of you finding this new person, a very very balanced and happy go lucky person जो आपको actual में बहुत खुश रखेगा. So put yourself out there and अपने आगे ना ये 10 चीजें मत रखिए कि ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, इतना ये करना चाहिए. वो कुछ चीजें होती हैं which are non-negotiable. जैसे I want a person who has an equal financial standing or someone who is ambitious. कुछ चीजें होती हैं जो हम अपनी तरफ से आते हैं कि यार इतना टॉल तो होना ही चाहिए, इतना हैंडसम होना चाहिए, उसके ऐसे बाल होने चाहिए. So don't get fixated on that. You will get married. और अगर कोई ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में जो एक्चुअल में आपके साथ अभी तक है और चीजें कन्वर्ट नहीं हो पा रही हैं, आई एम वेरी सॉरी टू से, it's a difficult thing. It might not turn out to be, it might not convert, but the person that you will find, you will be grateful कि आपकी शादी उनसे नहीं हुई जिनसे आप चाहते थे, और उनसे हुई जिनसे जो एक्चुअल में आपके लिए बने हैं. You will be very very happy in a relationship, but stop getting fixated on certain people. I hope that helps. Okay. So आरती जी, you are looking to get married, so मैं यही बोलूंगी कि इमोशनल होके कोई डिसीजन मत लीजिएगा. There's no one person who can make you happy. So be happy about find your happiness first, and then when two people with cups full of happiness come together, they create a happy world. But एक का कप अगर खाली है और आपको लग रहा है कि कोई आपका कप भरेगा, तो there's always disappointment. I hope I'm making sense. Perfect. So I think we should conclude this session for today and hopeful for the next week. I guess अभी आज का जो इनफैक्ट इतना हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिकॉज दिस वाज आवर फर्स्ट सेशन एंड इट वाज लाइक थैंक यू सो मच टू भूमिका जी. वेरी लास्ट मोमेंट वी जस्ट डिस्कस अबाउट लास्ट नाइट, राइट? या इनफैक्ट इट वाज लास्ट नाइट 9:30 10 p.m. we decided to do this thing and somehow it's turned out really really well. And I'm so grateful for all the people who joined us, and we'll be doing this every week. And please feel free to share, like Self-Made Strong Girl has said, self-love is one thing which people want to learn. And she has said that letting go is something, she needs a session on letting go.
So of course we'll start taking these sessions, and in case you have any suggestions, any queries, please feel free to text any one of us. Please DM us. Also, I have a WhatsApp group जहाँ पे दीपक जी भी हैं. So I have a WhatsApp group. We will be happy if you would like to join us. I will share the WhatsApp group link also in the comments. So we would look forward to meeting you all more Perfect. often. Perfect. You're very welcome, Selectively Social Sachin. We are very grateful that you joined us and you liked the session. We will make sure that we keep on doing this weekly. Definitely. So yes, thank you so much, guys. For now, we'll take leave and hopefully see you next week. Thank you so much. Yeah. Thank you. Thank you so much. Thank you. Yeah. Bye. Bye. I don't know how.